Good morning to everyone. I am Pooja Pawar from Perfect Logic Private Limited. In previous session, we have seen how to create credit note, debit note, and JV for single or multiple members. In today's session, I will explain about GST setting and reports related to the GST. Before starting the session, I will give you a quick introduction of the software. This e-society software is specially designed for the cooperative housing society. This software used to maintain your society's account and billing related information. It makes society's finance clear and easy to understand. This e-society software keep a track of everyone's bill and payments. We are continuously enhancing our software with new features, rolling them out to you on an ongoing basis. For further assistance, feel free to contact Perfect Logic on 98200 54086 or email us at perfectlogic@gmail.com. Now let's dive into today's topic, which is GST setting and reports related to the GST. Now let's start the topic. There are three steps to apply GST setting. We will go through it one by one. Now first step is we have to create three ledger head, CGST, SGST, and tax round under the tax collection. For that, we will go to ledger head. Here we will click on plus sign. Here in particular, we will write CGST, and in subgroup name, we will take tax collection. Then save it. Now we will create ledger head for SGST under the tax collection. Save it. Now we will create a ledger head for tax round under the tax collection. Save it. This is first step. We have to create three ledger heads for CGST, SGST, and tax collection. Now next step is we will go to parameters, and here in parameters, click on GST account. We have to set this parameter of GST. First, we have to take this GST applicable. Now from CGST account, we will select the CGST ledger head which we have created. In SGST, we will select SGST. Then in tax round, we will select tax round. Now click on update. Okay. Now go to define GST rate. Here, click on plus sign. Enter here effective date from which the GST will get applied, like 01/04/25. Insert the GST percent here. CGST 9%, SGST 9%. Now save this form. I will explain all those fields one by one. Now let's go to third step. We will go to ledger head. The head on which GST or GST applied, we have to go to that head. Like maintenance charges, I want to apply GST on this head. Then edit the form. Then click on service tax or GST applicable. Save it. Now I want to apply GST on water charges. Edit it. Tick this checkbox, service tax or GST applicable. Next, I want to apply GST on electricity charges. I am not applying GST on sinking fund. I am applying GST on gas charges. Now here we can see I have applied GST on 4 accounts and not applied GST on a sinking fund. That is for one account.
Now we have seen the three steps. First, we have created ledger head here for CGFT, SGFT, and tax round. The second step in we go to GST account and set GST account here. And in define GST rate, we have defined GST rate here. And third step is we go to ledger head and those head on which we are going to apply the GST, tick that checkbox service tax applicable. These are the compulsory three steps. Now I will explain about this round of method. There are two round of methods, that is next to rupees and standard. I will explain it here. In standard method, if our GST amount is 255.10 paise, in this case, in standard method, if this amount is less than 50 paise, then it will round off to 255 rupees. And if the amount is 255.1450 rupees, which is greater than 49 paise, so it will round off to the next 2 rupees, that is 256 rupees in standard method. But in next 2 rupees, even if your amount, GST amount is 255.10 paise, even though it will get round off that amount to 256 rupees, and even if that amount is 255.60 rupees, even though it will round off to 256 rupees. This is what the difference between standard and next to rupees. These two are round off methods. I will edit it. We'll see it one by. Now I am selecting standard method. Save it. Now we will see the first scenario. If you want to apply GST for all unit types, in this scenario, if your requirement is you want to apply GST for all the unit type, all the members, in this scenario, you don't have to select anything. Just save this form. Now close it. Now go to generate bill. Now bill for, I have already created bill for the April month. Now I am generating bill for a May month. Here we'll take due date. Now click on OK. Here we can see, here GST get applied for this 4,500 rupees. We want to see on which ledger head this GST is applied. Double click on this checkbox, text box. Here you can see for those particulars on which GST is applied, those are showing in yellow color. और जिन पे GST नहीं अप्लाई हुई वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है. So for this four ledger head, maintenance charges, water charges, electricity charges, and gas charges, GST is applied. And for the sinking fund, GST is not applied. So let's calculate it. Ment 2,000 rupees for maintenance charges, 500 rupees for water charges, 1,000 rupees for electricity charges. That is addition of this 3,500 rupees, and this gas charges including, that is 4,500 rupees. So taxable item value is 4,500 rupees. And now we will calculate the GST. 9% of this 4,500 rupees are multiplied by 0.09 equal to 405 rupees. That is 9% of 4,500 rupees. This GST amount is coming here. That is 405 rupees. For CGST 405 rupees and SGST 405 rupees, and amount is added here.
Now go to next. Here we can see GST is applicable for all the members. As we are seeing the first scenario, how to apply GST for all unit types. We have not selected any criteria here. Then GST is applied for the all members. Here we can see these are the residential members, and from triple one, these are the commercial members. So GST is applied for the all members. Now we will see second scenario, how to apply GST only for the residential unit type. For that, we will go to parameters. In parameter, we will go to GST rate. Here, edit the form. In bill by, we will select unit type and save this form. Now go to define bill by GST parameter. Click on plus. Enter the effective date, that is 01/04/25. Unit type, select the residential. As we want to apply GST only for the residential unit type, select unit type here as a residential. Save this form. Now here, if your requirement is like you want to apply the GST for the residential for some amount limit. In this case, you can enter here amount, like if you want to apply GST for the residential only, their tax limit is 2,500 rupees. Then you can enter the amount here. So on bill, if the tax amount is greater than 2,000, including 2,000 to 2,500 rupees and greater than that, then GST will get applied. Now we will see only this scenario normal method without any tax limit. Now here we can see we have selected that residential, then this amount value is coming in the grid. Now close this form. Now go to generate bill for menu. Now we will see it one by one. I will select only residential member for residential unit type. Click on OK. Here we can see for all the residential members, GST get applied, as I have selected only the residential unit type. Now cancel this form. Now I will generate bill only for the commercial. Click on OK. Here we can see, as I have selected commercial unit type, here no GST get applied for the commercial unit type member. Now we will generate the bill for both commercial and residential. As this is residential member, from A dash triple one onwards, those are the commercial member. We can see for residential bill, GST get applied. As this is A triple one, this member is commercial. So for commercial member, GST not get applied. Now we have seen second scenario. Now let's go to third scenario. For that, we will go to parameter.
In parameter, we will go to GST rate. Now, in third scenario, we will see GST calculation including interest and penalty. For that, we will edit this form. Click on GST calculation including interest and penalty. Pick this option. Save the form. In this scenario, जो भी GST अमाउंट होगी टैरिफ लगाया है वो प्लस उस बिल में जो भी इंटरेस्ट होगा और पेनल्टी होगी वो ऐड करके उस पे GST कैलकुलेट होगी इफ वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन नाउ वी विल जनरेट बिल फॉर मे मंथ क्लिक ऑन ओके here we can see this GST get apply for this for particular maintenance charges, water charges, electricity charges, and gas charges. The total of this four is 4,500 rupees. After that, this 4,500 rupees plus interest is 88 rupees plus this penalty is 100 rupees. Total amount is 4,688. This amount is coming here. Taxable value rupees 4,688 rupees. GST is apply on this amount that is including the interest and penalty. Now we will calculate the 9% of this amount. That is 421.92 rupees. This amount is coming here. 421.92 rupees. Now go to parameter GST rate. As we have selected round of meter standard, in this scenario here we can see this both amount get added, that is amount get 843.84 rupees, and in standard method this is round off to 844 rupees. Now here we can see this PGST and SGST amount is यहाँ पे ऐड करके राउंड ऑफ किया है. If you want the CGST amount first rounded off, that is it became 422 rupees, then here 422 rupees and then get added. In this scenario we can go to this form, edit this form, double tap on this blank space, then here one checkbox will appear. We have to tick this checkbox each of CGST, SGST and IGST amount. Tick this box, save the form. अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे CGST, SGST अमाउंट सेपरेटली राउंड ऑफ करके उसकी एडिशन करनी है तो हम यहाँ पे ईच ऑफ CGST, SGST एंड IGST इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे. नाउ मैं फिर से ये बिल जनरेट करती हूँ. जनरेट बिल. नाउ हियर वी कैन सी हमने वो चेकबॉक्स टिक किया था. Now here CGST amount get round up to 422 rupees. SGST amount also get round up to 422 rupees. Then it will get added. As we have seen the third scenario, how to calculate GST including interest and penalty. Now we will go to fourth scenario. For that we will go to parameter, GST rate, edit the form. Now the fourth scenario is how to apply GST to be calculated after subtracting with it.
For that, tick on this checkbox. GST to be calculated after subtracting rebate. Save the form. Close it. We will go to previously generated bill, like edit the form. Now हम यहाँ पे एक रिबेट ऐड करते हैं, 100 रुपीज. Now let's calculate this amount. As the total taxable amount value is 4,500 rupees minus this rebate amount, that is 100 rupees. Total amount became 4,400 rupees. हम इस पे 9% GST कैलकुलेट करते हैं. It became 396 rupees. This amount coming here. So in this scenario, we have seen how to calculate GST after subtracting the rebate. If you want to, before generating bill, ये रिबेट इस जीएसटी अमाउंट से माइनस हो जाए तो हम उस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे. तो ये रिबेट अमाउंट ये टैक्सेबल वैल्यू से माइनस हो जाएगा और उस पे जीएसटी कैलकुलेट होगी. Now we will see the next scenario. For that, we will go to parameter GST rate. It is the form. Here we will see GST to be calculated if GST tax amount greater than the tax limit. If you want to set some limit like 2,500 रुपीज के ऊपर अगर अमाउंट होगी तो ही ये जीएसटी उस पे अप्लाई होगी. इन दिस सिनेरियो हम यहाँ पे जीएसटी लिमिट सेट कर देंगे 2,500 रुपीज और इसको सेव कर देंगे. तो इन दिस सिनेरियो जो भी बिल में अमाउंट 2,500 रुपीज से ऊपर होगी उसी पे टैक्स लगेगा. जिस जिस भी बिल में 2,500 रुपीज से नीचे बिल होगा, बिल अमाउंट, तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा. Now we will generate the bill. Go to generate bill. Select bill for May month. Click on OK. Here we can see if taxable item total amount is 4,500 rupees. तो इस पे ये जीएसटी अप्लाई हो गया है. Now here we can see for this member the GST amount is 1,600 rupees, which is less than 2,500 rupees. तो इस मेंबर को जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि ये अमाउंट 2,500 से नीचे है, तो इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है. और जिस भी मेंबर के बिल अमाउंट ग्रेटर देन 2,500 है उन पे जीएसटी अप्लाई हुआ है. Now we will see the next scenario. For that we will go to GST rate masters, edit the form. अगर हमें ये if you want to calculate GST on the different amount of tax limit, for that we will click on this option. Save it. When we click on this option, so in this scenario, जो भी बिल अमाउंट होगी like इफ बिल इज 4,000 रुपीज और ये हमने यहाँ पे जीएसटी लिमिट 2,500 रुपीज सेट किए, तो वो टैक्स अमाउंट जो भी है माइनस ये जीएसटी लिमिट करेगा और जो भी अमाउंट होगी उस पे वो जीएसटी लगाएगा. लाइक इफ बिल अमाउंट इज 4,000 रुपीज माइनस ये जीएसटी लिमिट 2,500 रुपीज, दैट इज 1,500 रुपीज. For on that amount GST will get applied.
Now we will see this scenario. Go to generate bill, bill for May month. Click on OK. Here we can see the taxable value is 4,500 rupees और ये taxable value that is 2000 इसमें 4,500 rupees plus 100 rupees और ये 88 rupees that is हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 4,500 rupees plus 100 rupees plus 88 rupees फ्रॉम दिस अमाउंट हमारा जो भी टैक्स लिमिट है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2,500 rupees देन अमाउंट बिकेम 2,188 तो जो भी टैक्स लिमिट हमने सेट किया था वो इसमें से माइनस हो जाएगा और इससे जीएसटी कैलकुलेट होगा दैट इज 196.92 rupees. Here we can see if this amount is less than 2,500 rupees, इस पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ. Now we will see the next scenario. Go to parameter, GST rate. If you want to apply the GST tariff category wise, for that we will go to this form, edit it, go from bill by drop down, we will select tariff category. Now we will make this limit 0. Select here tariff category, save it. Now go to ledger head. From ledger head, we will go to bill category. हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बिल टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर बिल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ शॉर्ट कोड डालेंगे रेगुलर आरई बिल कैटेगरी में हम रेगुलर लेंगे रेसिडेंशियल लेंगे इसको सेव करेंगे और एक ऐड करेंगे फॉर द कमर्शियल यहाँ पे कमर्शियल डालेंगे इसको सेव करेंगे नाउ वी विल गो टू डिफाइन कैटेगरी वाइज टैरिफ नाउ क्लिक ऑन प्लस in bill category we will take residential here take tariff name maintenance charges save it take one again in bit category we'll take residential and tariff name will take water charges save this now we will take tariff for the commercial we will take tariff name electricity for the commercial we will take or one more tariff which is gas charges save it now click on show tariff under this category here we can see for the commercial unit type we have selected electricity charges and gas charges and for the residential tariff will get applied on this maintenance charges and water charges. If our requirement is like मुझे रेसिडेंशियल जो भी रेसिडेंशियल यूनिट टाइप में जो भी मेंबर है उन उनके बिल में मेंटेनेंस चार्जेस और वाटर चार्जेस पे ही जीएसटी लगना चाहिए और जो भी कमर्शियल है उनके बिल में इलेक्ट्रिसिटी और गैस चार्जेस पे ही जीएसटी लगना चाहिए इन दिस सिनेरियो वी विल चूज टैरिफ कैटेगरी नाउ क्लोज दिस फॉर्म
Now go to parameter in GST rate. Go to define bill by GST parameter. Edit it. यहाँ पे हमने जो भी अभी टैरिफ ग्रुप क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैरिफ ग्रुप में रेसिडेंशियल, इसको सेव कर देंगे। हियर वी कैन सी जो भी हमने ऐड किया था टैरिफ, दैट मेंटेनेंस चार्जेस एंड वाटर चार्जेस आर कमिंग हियर फॉर रेसिडेंशियल मेंटेनेंस चार्जेस एंड वाटर चार्जेस। नाउ वी विल ऐड फॉर द कमर्शियल। हम यहाँ यूनिट टाइप लेंगे कमर्शियल, टैरिफ ग्रुप लेंगे कमर्शियल, जो भी हमने अभी क्रिएट किया था, और इसको सेव कर देंगे। तो जैसे हम सेव करेंगे तो जो भी हमने बिल कैटेगरी बनाया था कमर्शियल के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड गैस चार्जेस, विल शो हियर फॉर द कमर्शियल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड गैस चार्जेस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, जीएसटी लगेगा, और रेसिडेंशियल के लिए मेंटेनेंस और वाटर चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। नाउ वी विल सी इट बाय एग्जांपल। जनरेट बिल पे जाएंगे, बिल फॉर मे, क्लिक ऑन ओके। Double click on this text box. Here we can see in yellow color, ये रेसिडेंशियल यूनिट टाइप वाला मेंबर है, तो इसके मेंटेनेंस चार्जेस और वाटर चार्जेस पे जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। हियर वी कैन सी हमने रेसिडेंशियल के लिए मेंटेनेंस और वाटर चार्जेस लिया था, तो इनकी टोटल 2000 प्लस 500, 2500 रुपीज। इस पे 9%, दैट इज 225 रुपीज जीएसटी लगा है। नाउ वी विल सी फॉर द कमर्शियल। A111 ये कमर्शियल मेंबर है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वी कैन सी फॉर द कमर्शियल वी हैव सिलेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड गैस चार्जेस। सेम हियर वी कैन सी यहाँ पे गैस चार्जेस पे और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, दैट इज 1000 प्लस 1000, 2000 रुपीज। इस 2000 पे ये 180 रुपीज जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। तो आवर रिक्वायरमेंट इज लाइक, हमें रेसिडेंशियल के लिए अलग हेड पे टैरिफ लगाना है और कमर्शियल के लिए अलग हेड पे टैरिफ लगाना है। तो इन दिस सिनेरियो वी कैन सी टैरिफ कैटेगरी। नाउ विल जनरेट बिल फॉर दिस। तो हियर वी कैन सी, अगर हमें ये बिल जनरेट करने के बाद देखना है कि कौन सा इसमें इसमें से किस हेड पे जीएसटी लगा है, तो वी क्लिक ऑन दिस text box. Then we can see so yellow color indicate the GST applied on that head, and green color shows that GST is not applied on this three heads. This is for the residential. अब हम इसकी प्रिंट करके देखते हैं। कहेंगे इसको प्रिंट करेंगे। यस, क्लिक ऑन ओके। This is one of the GST bill format, bill group wise with receipt. Here we can see जो भी जिस भी हेड पे जीएसटी नहीं अप्लाई हुआ है वो पार्ट ए में आएगा, और जिस भी हेड पे लगा है वो पार्ट बी में आएगा। तो यहाँ पे ये रिसीट, दिस इज वन ऑफ द बिल फॉर्मेट फॉर द जीएसटी बिल विथ रिसीट। नाउ विल सी अनदर फॉर्मेट, फॉर दैट वी विल टैप ऑन दिस ऑप्शन बिल विथ प्रीव्यू बिल डिटेल। इसको सेट रिपोर्ट कर देंगे।
Yes. Okay. Now click on OK. This is one of the GST bill format जो प्रीवियस बिल का एरियर शो करता है। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मंथली आ जाएगी। यहाँ पे इसकी रिसिप्ट शो हो जाएगी। फिर भी हियर वी कैन सी पीजीएसटी एसजीएसटी जो भी जीएसटी अमाउंट है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। विदाउट now we'll see the reports related to the GST. For that, go to reports, GST report, GSTR CD। यहाँ पे हमने भी मई मंथ का सिलेक्ट करेंगे। Click on show. Okay. Here we can see this form। यहाँ पे मेंबर का पूरा नाम आ जाएगा, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये काउंटर पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस पे, ये पूरी डिटेल इस फॉर्म में आ जाएगी। If you want to insert the place of supply, then you can go here, place of supply, and write down the place of supply, that is Mumbai. Then click on show. Then this will updated in this column, place of supply। यहाँ पे पूरी जीएसटी की डिटेल इन डिटेल में आ जाएगी। जीएसटी रेट, जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी का था, टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट जो भी हमने बिल जनरेट किया था, इस हिसाब से ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू, सारी डिटेल इस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। नाउ क्लिक ऑन प्रिंट। So we can print this report this way। आपको ये तो यहाँ पे पूरी डिटेल जीएसटी की आ जाएगी। If you want to export to this form into Excel, then we can do this on the same form, export to Excel, तो ये Excel में कन्वर्ट हो जाएगा। Now we will see another report। For that we will go to now we will see bill register। We will go to master, then society, and society will go to tariff mapping for bill register। Here click on this button। Here we can see those head on which GST is apply are showing in yellow color, and on those head GST is not apply are showing in green color। Now go to show regular bill register, no area, click on here। ये हमें पार्ट ए और पार्ट बी में देखना है, तो वी हैव टू टिक ऑन दिस ऑप्शन जीएसटी पार्ट ए पार्ट बी। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फ्रॉम में डेट डालेंगे 01/05/25। देन क्लिक ऑन शो बिल रजिस्टर। हियर वी कैन सी ये पूरा बिल रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी यहाँ पे पार्ट ए में सिंकिंग फंड दिखा रहा है, तो फॉर इन पार्ट ए जिस भी हेड पे जीएसटी नहीं अप्लाई हुआ है वो पार्ट ए में आएगा, और जिन भी हेड पे जीएसटी अप्लाई हुआ है लाइक मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड गैस चार्जेस, GST is applied, those will come in part B। Now here we'll take calculate one member GST। Now here we can see this as such this member is residential member, as we have generated this bill. For the residential member, we have applied GST on a maintenance charges and water charges। So
We'll calculate this. Maintenance charges is 2000 rupees plus water charges 500 rupees. That is 2500 rupees. On this amount, GST get applied. So multiply by 9%, 0.09. That is 225 rupees. Here we can see CGST is 225 rupees and SGST is 225 rupees. That is total GST amount is 455 rupees. Here we have calculated it for the residential member. For residential member, we have applied GST for the maintenance and water charges. Now we will take this example. This is 8111. This is commercial member. For commercial member, we have applied GST for the electricity charges and gas charges. So we'll calculate this. Electricity charges are 1000 rupees and gas charges are 1000 rupees. That is 2000 rupees. On this 2000 rupees, GST get applied. That is 9%. This amount is 180 rupees. So यहाँ पे we can see CGST amount is 180 rupees and SGST amount is 180 rupees. The total is 360 rupees. This GST get apply on this commercial member. This is all about the bill register. We will take one quick revision of the GST. For applying the GST, there are three steps. In first step, we have to create the three ledger head. We'll go to ledger head, create the CGST, SGST, and tax round. These three ledger head we will create. After that, we go to parameter. In parameter, we will set this GST parameter, CGST, SGST, tax round. Then we'll go to define GST rate. यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारा जो भी सिनेरियो है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चूज करेंगे अगर हमें पूरे मेंबर को लगाना है या फिर सिर्फ रेसिडेंशियल को लगाना है अकॉर्डिंगली वी विल चूज दिस पैरामीटर. After that we will go to ledger head. On ledger head जिस भी हेड पे हमें जीएसटी लगाना है उस हेड पे हमें इस सर्विस टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे. These are the three compulsory steps to apply GST on a bill. This is all about the GST setting and reports related to the GST. Thank you everyone for joining the session.